साहिबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है, अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ जाता है। आज की तकरीर के रूह रवां कायद अंजुमन डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कपिल पाटिल साहब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल महाराष्ट्र, all the dignitaries and office bearers of Anjuman Islam and members of General Council and General Board, respected board members of the Wali Muhammad and Dost Muhammad Trust Pune, respected local members of the Anjuman Islam PeerMohammed Campus Pune, esteemed guests, heads of the institutions and teachers, Assalamu alaikum, good evening. आज की इस बज़्म में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है, क्योंकि आपके नक्शे कदम जिस दम पड़े सहने अंजुमन में चरागा हो गया। आप जब तशरीफ़ लाए तो यहाँ हर तरफ जश्न बहारा हो गया, जश्न बहारा हो गया। नमस्कार, गुड इव्हनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कर्तृत्व ज्यांचे सागराप्रमाणे, ज्ञान ज्यांचे हिमालयाप्रमाणे, फुलला हा सोहळा त्यांच्या आगमनाने स्वागत करूया मान्यवरांचे शब्द सुमनांच्या पारिजाताने। आज आपले ते विधान परिषदेचे सदस्य कपिल साहेब सर आलेले आहेत। त्यांनी आपल्या कामात बहुमूल्य वेळ दिलेला आहे। इतके कामात व्यस्त असताना सुद्धा त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिला। आपल्या अंजुमन इस्लाम शाळेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन समारंभाच्या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, यासाठी आपण सर्वांनी मनापासून त्यांचे स्वागत करूया। आज आपण सर्वजण अंजुमन इस्लाम अहमद पीरमोहम्मद इंग्रजी शाळा स्थापन केलेल्या वटवृक्षाखाली जमलेलो आहोत। विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे कार्य साकारत त्या अथक प्रयत्नांना परमेश्वराने इतके यश दिले की आज आमच्या कॅम्पसमध्ये ऑर्फनेज, नर्सरी ते माध्यमिक शाळा, ज्युनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निक तसेच नर्सरी ते माध्यमिक इंग्रजी शाळा असून आज आमच्या कॅम्पसमध्ये 4000 पर्यंत विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। साहेब, मला हे सांगायला अत्यंत आनंद होत आहे की आमची शाळा ही धर्मनिरपेक्ष आहे। आमच्या शाळेत सर्व जाती धर्माचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत। आमची हीच खरी ओळख आहे। आज सर्वांना इतका आनंद झाला आहे की विद्यार्थिनींसाठी शैक्षणिक सर्व सुख सुविधांनी युक्त इमारत बांधण्यात आली आहे। नवीन इमारतीच्या रूपाने आमचे स्वप्न साकार झाल्यासारखे वाटते। ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पीए जनाब विकास पाटिल साहब इस बज़्म में तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे मौतबाना गुजारिश करती हूँ कि वो डाइस पर जलवा अफरोज़ हों।
आपका इस्तकबाल है सर इस बज़्म में। नमस्कार. माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आपली सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त केलेली आहे, कारण की त्यांच्या कुटुंबामध्ये आज एक जवळचे नातेवाईक त्यांचं दुःखद निधन झालेलं आहे. त्यामुळे ते येऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं की तुम्ही प्रत्यक्ष जा, मला सांगितलं की तुम्ही संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष जा आणि त्यांना सांगा की मी या कार्यक्रमाला आज उपस्थित राहू शकत नाही आहे. त्यामुळे त्यांच्या वतीने मी आपली सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो आणि त्यांच्या वतीने या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो. तसंच भविष्यामध्ये ते निश्चित या संस्थेला भेट देतील, कारण की आपल्या संस्थेचं जे काम आहे ते महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठं आहे आणि उपस्थित डायसवर आणि डायसच्या खाली उपस्थित असलेल्या सर्वांची मी त्यांच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि शैक्षणिक संस्था, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रश्न नेहमी धडाडीने, अगदी तडफेने जे सदैव विधानसभा परिषदेमध्ये मांडत असतात, ते आपल्याला आज प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. त्याच्यामुळे ते दादांची उणीव निश्चित त्या कार्यक्रमात भरून काढतील. आणि मी पुनश्च आपल्या सगळ्यांचे, उपस्थित असलेल्या संस्थेचे सगळ्यांचे माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करतो, माफी मागतो आणि त्यांच्या वतीने या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Good evening. Let us begin today's auspicious event with the praise of the most merciful, Almighty Allah. I would like to call upon Vice President of Anjuman-e-Islam, Dr. Abdullah Sheikh, for Tilawat-e Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. No gathering in Anjuman is complete without Tarana Anjuman. So let's hear it. अंजुमन 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 बुलबुले हम हैं और ये हमारा चमन बुलबुले हम हैं और ये हमारा चमन अंजुमन 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 हिंद की आबरू शान इस
इस्लाम की शम्मा जलती है यहाँ प्यार के नाम की शम्मा जलती है यहाँ प्यार के नाम की हमको हाजत नहीं कोई इनाम की आरज़ू है फकत इल्म के जाम की इल्म के जाम की बुलबुले हम हैं और ये हमारा चमन अंजुमन 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 I request our Senior Vice President of Anjuman-e-Islam, Mr. Mushtaq Antule Saheb, to welcome our guest. सदर अंजुमन डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, हमारे दोस्त विधान परिषद के बहुत सीनियर एमएलसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लगातार 3 मरतबा चुन के गए, वो कपिल पाटिल साहब, डॉक्टर नसीर काजी साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, मुइज़ मियाजीवाला साहब और ख़वातीनो हज़रात, आज का दिन अंजुमन की और पूना की अंजुमन के पूना ब्रांच की कैंपस की तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाने वाला दिन है। आज इस कैंपस में एक बिल्डिंग का इफ्तिताह होने जा रहा है, एक इमारत का इफ्तिताह होने जा रहा है कि जो इमारत हमारे कौम के नौनिहालों के लिए अंजुमन इस्लाम ने बनवाई है और जिसका इफ्तिताह आज हमारे सूबे के नायब वज़ीर आला अजीत पवार साहब के हाथों होने वाला था। अभी अभी आपको ये बताया गया है कि कोई ऐसी मजबूरी है उनकी कि उनकी फैमिली में, उनके ख़ानदान में किसी का इंतकाल हुआ है जहाँ पर उनको जाना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर ज़हीर काजी साहब और कपिल पाटिल साहब की मौजूदगी में हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सब लोगों का अंजुमन इस्लाम की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके आने से इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हैं और किसी ने क्या खूब कहा है कि आप आए तो महफिल में बहार आई है। आप आए हैं तो महफिल में बहार आई है, फूल तो फूल है, कांटों पे भी निखार आई है। मैं आप सब लोगों का, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि अंजुमन की मोहब्बत और अंजुमन हमारी सूबे में, महाराष्ट्र में, मुंबई शहर, पूना, पंचगनी और शोलापुर में जो तालीमी खिदमत और समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है, उसके लिए आपके दिल में जो कद्र है, उसके लिए आपके दिलों में जो अप्रिसिएशन है, उस अप्रिसिएशन का इजहार आप करने के लिए इस जलसे में मौजूद हैं। हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। कपिल पाटिल साहब, आप इस जलसे में मौजूद हैं, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं और आपने हमारी दावत को कबूल किया।
और न सिर्फ ये कि हमारी दावत को कबूल किया, बल्कि हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर काजी साहब के साथ और मेरे साथ आपने अजीत पवार साहब को भी दावत देने का ज़िम्मा जो है वो आपने उठाया था। हमारे अंजुमन के बहुत सारे मंत्रालय लेवल के ऊपर जो मसाइल रहते हैं, उसमें हमारे विधान परिषद के सदस्य MLC कपिल पाटिल साहब हमारा बहुत साथ देते हैं और हम लोगों को हमेशा जो है वो रहनुमाई करते हैं। हम कपिल पाटिल साहब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अंजुमन इस्लाम ने डॉक्टर ज़हीर काजी साहब की सदारत के पिछले 13-14 साल के अरसे में जो तरक्की की है, उसके ताल्लुक़ से आप सब लोगों को बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो मालूम होंगी, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं बता सकूंगा, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो खुद डॉक्टर ज़हीर काजी साहब आपको बताएंगे। इस दौरान एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कि जिसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं, कि किसी भी तालीमी इदारे के सामने जिसको हम खड़ा कर सकते हैं, महाराष्ट्र के, हिंदुस्तान के किसी भी तालीमी इदारे के सामने हम उसको खड़ा कर सकते हैं, ऐसा एक बहुत ही शानदार कॉम्प्लेक्स जिसको हम कालसेकर टेक्निकल कैंपस कहते हैं, वो बम्बई शहर से नज़दीक पनवेल में बन चुका है। और पिछले कई सालों से वहाँ पर इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की और आर्किटेक्चर की आला तालीम दी जाती है। इसके अलावा आप ही के ज़माने में डॉक्टर साहब, अंजुमन इस्लाम ने एक लॉ कॉलेज शुरू किया, कि जिस लॉ कॉलेज को अंजुमन इस्लाम ने आपकी सदारत में इस इदारे के साबिक सदर, इस महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर बैरिस्टर AR अंतुले साहब के नाम से उसको मंसूब किया। इसके अलावा इन्हीं दिनों में इस कॉम्प्लेक्स में हम जो इस इमारत का इफ्तिताह आज जिस हुआ है, उस इमारत की भी तामीर इन्हीं दिनों में हुई है। इन्हीं दिनों में पंचगनी के पब्लिक स्कूल में कई इमारतों की जो है वो रेनोवेशन हुई है, कई इमारतों को जो है वो अच्छा और इस्तेमाल के लायक बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं डॉक्टर साहब के जो आपकी सदारत में हुए। अंजुमन इस्लाम की तारीख़ में ये जितने भी काम हैं वो सुनहरी हरफों से लिखे जाएंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और अंजुमन के सारे चाहने वालों को जो आज इस जलसे में मौजूद हैं, आप जिस मोहब्बत से इस जलसे में आए हैं, जो आपने इस वली मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद, पीर मोहम्मद कैंपस और इस ऑर्फनेज को हमेशा से आपने आपका दस्ते ताउन पेश किया है, आप सभी लोगों ने, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और आपका न सिर्फ ये कि इस जलसे में इस्तकबाल करते हैं, बल्कि मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस कैंपस में होने वाली वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि हमारी कौम की बच्चियों के लिए, हमारे कौम की उन बच्चियों के लिए कि जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है, उनके माँ बाप बनकर आपने जो काम किया है उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और एक बहुत ही ख़ास शख्सियत का जिक्र करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और वो है मोहतरमा नाज़ुरा सत्तार साहिबा, कि जिनकी शायद 35 से 40 सालों की खिदमात को सराहने के लिए आज के जलसे में डॉक्टर ज़हीर काजी साहब अपने दस्ते मुबारक से उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो देने वाले हैं। मैं आप सबको एक बार फिर से इस शेर के साथ कहूँगा कि अंजुमन इस्लाम ने अपना फरीज़ा अदा किया है। अब
जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। Thank you, sir. I request our principal of English medium, Mrs. Asma Khan, to introduce our dynamic president, Dr. Zahir Qazi sir, under whose guidance Anjuman has progressed by leaps and bounds. Assalamu alaikum. Dr. Zahir Qazi, President of Anjuman-e-Islam, is a senior radiologist in the city of Mumbai. Dr. Qazi has completed his medical degrees, MD, DMRD in radiology and MBBS from University of Mumbai, FMRI and MARUM from Philadelphia, USA. Dr. Qazi, President of Anjuman-e-Islam from last 13 years, is associated with Anjuman-e-Islam since last 3 decades. During his tenure, there is a great historical expansion of professional colleges, school and research centers. The institute has flourished and achieved excellence in education. Sir has been responsible for expanding and strengthening the institute. Under his edge the Anjuman-e-Islam has risen to great heights. Sir has made great contribution in the field of education. He is the executive member of All India Muslim Personal Law Board. He is also a member on the Finance Committee of the Muslim Cricket Association and a member of the Core Committee for Education, Greater Municipal Corporation, Mumbai. Sir has worked a lot to uplift the minority and is associated with various social organizations. His incredible strength, passion, and marvelous work is really outstanding, for which he was honored with the Lifetime Achievement Award for contribution in the field of Indian System of Medicine by Government of India, Ministry of Ayush. He is bestowed on awards by Giants International for exemplary work in the field of education at the hands of Shri Manohar Parrikar, Honorable Defence Minister, Government of India. He was also conferred with ABP News Award in the field of education. Sir has given inspirational and eye-awakening lectures on contemporary issues. He was one of the key delegates to have met the Honorable Prime Minister of India on 9th May 2017 in Delhi to apprise His Excellency of the various education-related issues of Muslim. Anjuman-e-Islam is blessed and proud to have you, sir, as the President, and we hope that your encouraging spirit and support will always be with us. Thank you. शुक्रिया मोहतरमा। सर के ताल्लुक़ से ये कहना चाहूँगी कि फ़ख्र के काबिल है वो सबके लिए, काम जो करते हैं कौमों की भलाई के लिए। हो अज़ाइम जिनके कोहे हिमालय की तरह, उनको चुन लेती है दुनिया रहबरी के लिए। ये हमारे ऐसे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम रहबर अली जनाब ज़हीर काज़ी साहब। I request our President, Sir, Dr. Zahir Qazi, to kindly felicitate our guest of honor, Mr. Kapil Patil, Member of Legislative Council, Maharashtra. जी तो चाहता है पेश करें अंजुम वो गौहर, क्या करे बस में है हमारे फूल मगर। I request our Honorable Treasurer and in charge of this campus, Mr. Moiz Miyajiwala, sir, to kindly felicitate our President, sir. दुआ है
रहे फूल आपकी राहों में सदा, कदम कदम पर आपको मौसम बहार मिले। I request our guest of honor, President Sir, and Managing Committee members to kindly release booklet of Anjuman-e-Islam's PeerMohammed campus, Footprints for the Future. रख फरोज़ां अंजुमन की शमा क्या रब सदा, ये लहू देती है अपना रोशनाई के लिए। अंजुमन इदारे के लिए हमारे दिल से ये दुआ या कलमात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शे, आमीन। I request our President and Managing Committee members to present Lifetime Achievement Award to a grand lady who has served selflessly for Anjuman-e-Islam campus, Pune for nearly 4 decades, Mrs. Nazura Sattar. आपा की तकलीफ़ के बाद मौज़्ज़िज़ीन डाइस पर से आपको फेलिसिटेट करने आ रहे हैं। मोहतरमा नाजुरा सत्तार साहिबा, हमारे इसी अंजुमन के कैंपस में एक मरतबा जो फंक्शन मुनक्किद हुआ था, उसमें मोहतरमा को जो उस वक्त सदर साहब थे, उन्होंने अंजुमन की मदर टेरेसा के नाम से मौसूम किया था, उन्हें उस नाम से खिताब दिया था। मोहतरमा नाजुरा सत्तार साहिबा। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार मोहतरमा के लिए ये कहा जाए तो बजा होगा, मेरी ज़िंदगी यही के हर एक को फैज़ पहुँचे, मेरी ज़िंदगी यही के हर एक को फैज़ पहुँचे, मैं चराग़ रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ।
to speak, you. May I have your attention, please? Mrs. Nazura Sattar Saheba completed glorious 93 years. The orphanage has completed 97 years. There is a lady amongst the managing council of the local board. She is 91 years old. And this lady is going to speak about the 93-year-old grand lady. They are all young. They are not young. So 93 young and 91 young. Chief guest, Shri Kapil Patil ji, President of the Anju Board of Directors, esteemed board members, council members, and distinguished guests. It is a pleasure and a privilege to introduce to you our Lifetime Achievement Award recipient, Mrs. Nazura Sattar. Ma'am, you became a member of the orphanage team in the year 1985. Besides taking care of the orphanage, you were also responsible for developing its handicraft section. You have always been a caring guardian to our girls, listening to their problems and assuaging their pain. You have enabled so many in the orphanage to get married, start families, and take their place in society. You have guided them to become good wives and mothers. You symbolize the quintessential mother figure, looking after the welfare and best interests of every single member of the orphanage. In 1995, you set up the Polytechnic for training and skill development of the orphanage girls so that they could go on to not only support themselves, but their families if needed. Today, this institute has spread out to include destitute women as well. In 1988, you initiated the beginnings of caretaking and schooling of infants. And slowly, as the years pass by, this has grown into the English medium school we have today. In 2002, in recognition of your work and efforts, you were appointed chairperson of the campus. Under your able administration and supervision, the institute grew from strength to strength. Through the years, you have served as an icon, worthy of being called institute. So she is the Grand Dame of the Anjuman Islam Institute. You have worked wholeheartedly, without a break. Your dedication and selflessness warrant recognition and acknowledgement. And hence, this award, a Lifetime Achievement Award. Thank you, ma'am.
Mrs. Hamida Bhiwandiwala is one of our regular donors who has donated and contributed for the new school building of English medium. So I request. Today amidst us we have a family member of Alana's and a more familiar name in this orphanage, a lady with a golden heart who would visit this orphanage at least once in 3 months. That frequently she used to come all the way from Mumbai. The late Mrs. Hamida Bhiwandiwala, who was elected member of Anjuman Islam, and she belongs to the illustrious Allana family. The new building which is commissioned today, a substantial amount of funding has come from there, courtesy late Mrs. Hamida Appa Bhiwandiwala. Her illustrious daughter, Natasha, and her granddaughter have come all the way from Mumbai. They are usually not based in Mumbai but abroad. They are here, and so Hamida Appa's portrait will be released now, and I would like all of you to give a standing ovation to the lady.
Thank you, ma'am. Thank you, all members. I request our guest of honor, Shri Kapil Patil Saheb, Member of Legislative Council Maharashtra, to speak a few words. अंजुमनचे अध्यक्ष डॉक्टर झहीर काझी साहेब, अंजुमनचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष मुश्ताक अंतुले, डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर काझी, डॉक्टर मोइज मियाजवाला, ज्यांचा आपण नुकताच सन्मान केला, त्या नजुरा सत्तार मॅडम, उपस्थित सर्व पदाधिकारी, अंजुमनच्या या परिवारातले सगळे सहकारी, भावांनो, बहिणींनो आणि वडीलधाऱ्या बुजुर्गांनो, कार्यक्रम दुसरा होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री येणार होते, पण त्यांच्या घरात दुःखद घटना घडल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत. पण शो मस्ट गो ऑन, आणि म्हणून आपण कार्यक्रम पूर्ण करतो आहोत. आणि ज्यांचा सत्कार आपण केला, एक आपल्यात हयात नाहीत पण आपल्यासोबत जे आहेत सत्तार मॅडम, त्यांना सलाम करण्याचा, त्यांचा सन्मान करण्याचा, तर त्यात आपण चुकता कामा नये. मी डॉक्टर झहीर काझी आणि मुश्ताक भाई आणि सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार मानतो की या संस्थेचं एक वैशिष्ट्य आहे. संस्थेला इतिहास तो खूप मोठा है, बहुत लंबी हिस्ट्री है आज़ादी के आंदोलन से. मगर आज़ादी के आंदोलन में जिन मूल्यों के लिए लड़ाई हुई, जिनके लिए ये इंस्टीट्यूशन खड़ी हुई, उन मूल्यों को बरकरार रखने का काम आज के लोग भी करते हैं, उसी तन्मयता से, उतने ही कमिटमेंट से और उतनी ही मेहनत से. और उनमें से एक मूल्य ऐसा है कि उन सभी का आदर करना जिन्होंने इस इमारत को खड़े करने के लिए अपना पसीना दिया है, अपनी ईंट दी है, अपना योगदान दिया है, जीवन भर अपना काम किया है. ऐसे लोगों को याद करना, उनको सम्मान देना. मैं आज मुश्ताक भाई अंतुले साहब के साथ आ रहा था, तब मैंने उनको कहा कि यह अंजुमन की खूबी है कि आने वाले लोग तो दुनिया में तो चले जाते हैं, मगर जाने के बाद उनको याद बहुत थोड़े लोग रखते हैं. लॉ कॉलेज को जिस तरह से आपने अंतुले साहब का नाम दिया, बैरिस्टर अंतुले साहब का नाम दिया, तो मुश्ताक भाई ने 1 मिनट न रुकते हुए कहा कि बोले कपिल, इसका पूरा क्रेडिट जाते म्हणे डॉक्टर झहीर काझींना. ते नसते तर हे नाव इतकं चांगल्या पद्धतीने लागलं नसतं आणि एवढं चांगलं स्मारक झालं नसतं. ये बहुत बड़ी बात है. अंतुले साहेबांच्या घरातून एखादी व्यक्ती इतक्या सहजतेने 1 मिनिट त्यांनी लावलं नाही. डॉक्टर साहेब एका क्षणात त्यांनी सांगून टाकलं की नाही म्हणे, हे त्यांचं क्रेडिट आहे. त्यांची आठवण ठेवली आपल्या चेअरमन साहेबांनी, आपल्या प्रेसिडेंट साहेबांनी, मोठी गोष्ट आहे. पण अंतुले साहेबांची आठवण ठेवली, अशा अनेक मोठ्या व्यक्तींची नावं त्यांनी दिली. ही संस्था बदरुद्दीन तय्यबजींनी उभी केली असे. एक काळातले दिग्गज माणूस होते ते, मगर बड़ी इमारत होने के बाद वो ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती कि फिर इमारत टूटने लगती है. मगर बात ऐसी है, इस अंजुमन की खास बात ऐसी है कि जितक्या मोठ्या माणसांनी इमारत उभी केली, इमारत म्हणजे मी केवळ एक इमारत की एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ. जिन्होंने इस संस्था को खड़ा किया, आज भी वैसे लोग हैं
उतने ही ताकत वाले, वही सोच रखने वाले, बड़ा दायरा रखने वाले, और सबसे बड़ी बात है कि सेकुलर मिजाज रखने वाले। ये बहुत बड़ी बात है आज के दुनिया में। आज सत्तार मैम आपको जिस तरह से उन्होंने याद किया, आपको जिस तरह से वो पेंटिंग दे दी, बहुत बड़ी बात है। एक पोर्ट्रेट बना के देना, बाकी तो चीज़ें दे देते हैं, मगर ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको भी लगा होगा कि जिस संस्था केले, ज्या ऑर्फनेजसाठी मी काम केलं त्याची आठवण संस्थेने नीट ठेवली, ही फार मोठी गोष्ट आहे। आणि म्हणून मी डॉक्टर झहीर काझी साहेब तुम्हाला सलाम करतो, आणि मी तुमच्यासोबत काम करतो आहे याचा मला अभिमान वाटतो। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब के साथ काम करता हूँ। बहुत थोड़े लोग बचे हैं कि जिनके साथ आपको रहने का मौका मिलता है, नहीं तो लोग है कहाँ वहाँ। उस तरह के लोग जो निस्वार्थ है, निरपेक्ष है, संस्था से कुछ लेना नहीं है, ना पैसा, ना कोई सत्ता, ना कोई पावर, ना ये किसके आगे जाने की वाली सीढ़ी है। इस तरह से कमिटमेंट से काम करने वाले डॉक्टर साहब है, और डॉक्टर साहब वहां तक सीमित नहीं है। अंजुमन के लिए पूरा देश उनको जानता है, मगर इस देश की जो एक पहचान है सेकुलरिज्म की, उसके लिए डॉक्टर साहब जो काम करते हैं, बहुत थोड़े लोग आप में से जानते होंगे कि उसके लिए डॉक्टर साहब क्या क्या करते हैं। मैं पिछले 25-30 साल से उनसे जुड़ा हूं और देखता हूं कि हर जगह जहां इस तरह का मुद्दा आता है, वहां डॉक्टर झहीर काजी खड़े दिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं खड़ा हूं, ये अंजुमन खड़ा है। अंजुमन जिस विचारों से खड़ी है, जिस तरह से इन लोगों ने, पुराने लोगों ने इस इमारत को खड़ा किया है, जिन मूल्यों के लिए किया है, जिन मुद्दों के लिए किया है, उनके लिए मुझे भी खड़ा रहना ये बहुत बड़ी बात है। पर्सनल लॉ बोर्ड में है, मेडिकल एसोसिएशन में, ये तो जाहिर सी बात है, मगर मैं पिछले 2 मूवमेंट से मैं जिक्र करना चाहता हूँ, आपके पुणे के लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक मुस्लिम ओबीसी मूवमेंट के बारे में, मुसलमानों के जो पसमानदा तबके हैं, उन पसमानदा तबकों को न्याय दिलाने के लिए जो मेहनत डॉक्टर साहब ने 25-30 साल से की है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। और दिलीप कुमार साहब थे, तो मैंने देखा है दिलीप कुमार साहब किसकी सुनते नहीं थी, बहुत बड़ी असामी थी, मगर किसकी सुनते होंगे तो केवल डॉक्टर झहीर काजी की सुनते थे। डॉक्टर साहब ने कहा चलना है तो चल निकलते थे घर पे, घर की भी नहीं सुनते थे। इस तरह का से मैंने देखा है। ये लोगों को जोड़ना, संभालना ही कोई छोटी सी बात नहीं है। अंजुमन में ये बात हो रही है। दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं, जिस मूवमेंट से हम दोनों जुड़े हैं और जिस मूवमेंट से उनके दोनों घर के, मतलब पिताजी के घर से भी और ससुर तो इन लॉज के भी घर से, तो ये दोनों लोग जिस मूवमेंट से जुड़े, वो सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, राष्ट्र सेवा दल से जुड़े हैं, आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हैं। तो उस विरासत को संभाल कर रखना, उसको आगे लेके जाना, उसको कई लोगों से जोड़ना, ये भी वो काम करते हैं। राष्ट्र सेवा दल के आज वो ट्रस्टी हैं, और पूरे देश में जिस तरह से काम डॉक्टर गणेश देवी जी के साथ उन्होंने किया, 22 राज्यों में जाने का और उन्हें जोड़ने का, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अंजुमन ने इस देश के सामने जो मिसाल रखी है सेकुलरिज्म की, सब सर्वधर्म समभाव की, या सबको साथ लेने की, केवल ऐसी बात नहीं कि सबका साथ सबका विकास, मतलब सबको रोदना और खुद का विकास, इस तरह की बात नहीं करते हो। वो सचमुच अपने मन से सब लोगों को साथ जोड़ना चाहते हैं। और अंजुमन में हर संस्था में मैं देखता हूँ, वहाँ केवल लोगों को लगता है ये कोई दाढ़ी वालों की संस्था होगी, ऐसा नहीं है। यह हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी पढ़ते हैं, सरदार के बच्चे भी पढ़ते हैं, कौन नहीं यहाँ पढ़ता। अंजुमन का दायरा इतना बड़ा है, दोनों हाथ ऐसे फैले हुए हैं। और अंजुमन सही मायने में कि कुरान शरीफ में जो पहला शब्द है इकरा करके पढ़ो, तो उस बारे में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसको पकड़ के रखा है डॉक्टर साहब ने, और उसको हर तबके तक, केवल मुसलमानों तक नहीं,
तो अपने देश के हर तबकों तक ये मैसेज जाना चाहिए, इसके लिए वो काम करते हैं, वो बड़ी बात है। आज इस अनाथालय के लिए और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए डॉक्टर साहब ने और अंजुमन ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। अजित दादा के अधिकारियों से बात हुई, उनके घर में दुख की बात हुई। ठीक है, मेहमान नहीं आए तो इसलिए काम रुकना नहीं चाहिए, काम आगे बढ़ना चाहिए। और मेहमानों के लिए काम नहीं होता, काम के लिए मेहमान होते हैं। मेहमान आ जाएंगे कभी ना कभी, ये खुशबू जिनको पहुंचेगी वो आ जाएंगे। हम किसी के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं हैं। और मुझे लगता है कि देश के बहुत बड़े बड़े लोग, दुनिया के बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। ये बात रख के मैं मेरे बात को विराम देता हूँ और यहाँ ही रुकता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, sir, for expressing your wonderful views. I request our Honorable President, Dr. Zahir Qazi, sir, to address the August gathering. सामाईन, अब आप ऐसे साहिब सुखन को सुनने जा रहे हैं जिनके बारे में ये कहना बेजाना होगा कि इजहार जिनका आईना और तख़य्युल जिनका महताब है। आइए समात फरमाते हैं ज़हीर काजी साहब के अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, good evening. For Anjuman Islam, today is one of the most memorable evening. The evening which we all have gathered here. ये जो क्वाड्रेंगल में आप जमा है, ये चारों अतराफ में यतीम खाने की इमारत है। इट्स एन ऑर्फनेज बिल्डिंग। हर मज़हब में और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि यतीम के सर पे अगर आप हाथ रखो तो कितने सारे नेकियां आप जोड़ते हैं। आज यतीम खाने के प्रेमाइसिस में आप गुज़िश्ता 2 घंटे से तशरीफ़ फरमा है। आप बहुत सारे नेकियां कमा के जा रहे हैं, क्योंकि यतीम खाने के बच्चियां आपको देख रही हैं। उनके इस कैंपस में आज एक रौनक आई है। और जब आप उनसे गुफ्तगू करोगे, मेरी दरख्वास्त है आप सब में से, आपको महसूस होगा कि ये लोग, ये बच्चे बदनसीब नहीं हैं, ये नसीब वाले बच्चे हैं। इनकी दुआएं आप लीजिए, क्योंकि मेरे साथ आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त, अंजुमन के दोस्त, one of the staunch secularists and socialists, someone who could get elected on 3 consecutive occasions from the teachers' constituency in Mumbai, is a history. He is with us today, who represents the teachers. As regards to the chief guest of today's function, he was about to come. All those formalities were taking place. Unfortunately, Mrs. Sharad Pawar's sister, brother-in-law passed away. यानी शरद पवार के हमजुल्फ गुजर गए। 5 बजे की खबर थी और उनको वहाँ जाना पड़ा शमशान में, और उन्होंने सब प्रोग्राम कैंसिल किए। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा, मैं वादा दिलाता हूँ कुछ बड़ा फंक्शन ना रखिए, लेकिन मैं आपके यहाँ आके जाऊँगा। यानी हमने सोचा कि हमारा प्रोग्राम के 2 हिस्से थे। सबसे बड़ा प्रोग्राम का हिस्सा था हमारा, जिस खातून ने इस इदारे के लिए अपनी जान, अपनी खुशियां, हर कुछ दी है। 1985 में जब वो यहाँ आई थी, आज करीब 1925 में 40 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, इन्होंने इस जगह को, इस यतीम खाने को, उसके बाद जो स्कूलें आई उस दौर में, पॉलिटेक्निक आई, इंग्लिश मीडियम आई, ये सब एक खातून की कोशिश थी, जिन्हें आज हमने सराहा। जब ये कैंपस में आई तो इनको खाला जान करके बुलाया जाता था। कुछ दौर आया तब इनको नानी जान बोला गया। अभी कुछ बच्चे इनको पढ़ नानी भी बोलते हैं।
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब ये नहीं कि आप रुखसत ले रहे हैं. अक्सर ये होता है, किसी को घर बिठाना हो तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. कोई तुम्हारा दुश्मन हो उसको दे दो एक बार, चुप बैठ जाएगा. ये नहीं है. And my distinguished gathering who have come from all sections of the society from the city of Pune. Pune is a hub known for education. And some of the eminent people are here. It gives us immense satisfaction to see you in this audience, that you are appreciative of effort that Anjuman Islam is doing for last 149 years. This is one organization for the benefit of the elite here, established 1 year earlier than Aligarh Muslim University way back in 1874. And on 23rd Feb 2023, we will be entering 150th year. And the whole year, you will be invited for various functions, foundation laying ceremony, inauguration of buildings, new institutions. We are also being invited in Jammu and Kashmir by the Lieutenant Governor. Maybe in month of June we will be visiting. So we are going beyond Maharashtra, beyond India. You will be happy to know that Anjuman has established OFA, Overseas Friends of Anjuman, in the United States of America. We have registered in New York and we are about to get the tax exemption. Our alumni are holding the prominent post there, and we have some of the most distinguished alumni in the United States of America, in Europe, and Gulf as well. We are bringing them all on one platform. Normally, the people feel the moment you talk of alumni, you are talking of money, flus. No, sir. Fundraising is our not criteria. We want them to have a sense of belonging and giving back to the alma mater in kind, goodwill, and their connecting links in a country like United States of America. We have a program, exchange program for our faculty in US. Our students will help them out to place in some of the best universities, including Harvard. We are talking on that. And we will be associated to the United Nations program, UNICEF, WHO. Anjuman has all those credentials to be a part of it. So we are moving beyond India, beyond Maharashtra. Today, we are here for inauguration of a new building for English medium school. When we send an invite, and that was e-invite of course, a lot of people ask, ये new building क्या चीज़ है? इस कैंपस में यतीम खाना कायम हुआ, almost 97 years. Thereafter उर्दू मीडियम स्कूल शुरू की गई, फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल आई. ये अंजुमन का कॉन्सेप्ट है कि रन पैरेलल बोथ वर्नाकुलर एज इंग्लिश मीडियम. वी वेंट टू जूनियर कॉलेज, and ladies and gentlemen, we created one of the most sought after polytechnic here for girls polytechnic, which the government of India and government of Maharashtra has put on a category 1. Lot of young girls in Pune have been trained in skill. They are entrepreneurs and they are employed. Thousands of them. So this is ongoing process. For the benefit of distinguished audience today, there are 2 categories of private institutions. I would like to have your attention. Some people are yawning, I understand, even I was doing so. There are 2 categories of private institutions. One, money making, and the second is doing charitable work. Anjuman falls truly in the category of charitable work.
In this campus, 50% students are not able to pay fees. 70% of students are first generation learners. जब ओपन डे होता है तो पेरेंट्स हमको कुछ भी नहीं आता. In Pune district, English medium school of this campus has started adult education as a part of new education policy, which when we organize a meeting on Zoom, the Chief Education Commissioner tells us Anjuman is the only institution in entire Pune district who has implemented adult education as per the new education policy. This being exclusively girls' campus of its kind of Anjuman Islam. And Anjuman is known for empowerment of women. 90% of our head of institutions, headmistresses, principals, directors are wonderful ladies who are doing a tremendous job. 40% are students are girls, and we manage to girls' orphanage. The message down the line to the people who matter that we are a part of women empowerment. Unfortunately, my community is being talked about that we don't attend, don't give the rights to the women, which is contrary. In Islam, if you educate one daughter or two daughters and then settle them, they take you to the door of the heaven. इतनी बड़ी बात लड़कियों के तालीम के बारे में, जैसा आपने कहा इकरा, लेकिन इसमें ये आगे ये भी आया है. तो अब वो दौर है, हमारे लड़कियां घर नहीं बैठती, हमारे लड़कियां आला तालीम हासिल करती हैं और लड़कों से बेहतर है. आज एक दूसरी समस्या है इस मुल्क में, हमारे यहाँ नहीं सब जगह है, कि लड़कियां अच्छा पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ नहीं रहे. एक प्रॉब्लम भी है अपने आप में. तो थोड़ा बहुत हमने अब भी एम्पावरमेंट ऑफ बॉयज़ भी करना चाहिए, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे. So I said here 50% don't pay fees, 70% marginalized. We have cross subsidy. And when we start expansion programs, we have donors who come up. That's why today we felicitated those donors who were responsible for the state-of-art school building. I would like you to go and visit now or later. It is on par with any international school. And the students who come here are from lower middle class or from hutments. You give a surprise visit, catch some of the students, you will be surprised from where they are coming. With great difficulty, they have 2 square meals. They don't have a proper place to stay. Our children have got a study room, computer, tablet, Wi-Fi, state-of-art mobile, everything. These children don't even have the basic facilities. I congratulate all my teachers because they have to deal with this kind of students as compared to the students in the convent school who are coming from the affluent family. They carry the flag of Anjuman much ahead of beyond our expectations. Ladies and gentlemen, if I have to start giving a sermon about Anjuman, you might not come in the next function. It's a long story, very exciting story, and achievements par excellence. We have got amidst us the principal of home science. That institute was in Warsaw. We had to shift in the Bombay VT campus, and she said, I will turn it around. Now we are not able to give admissions, and in last 2 years, her students secured first position in SNDT University, a girl with hijab. And she got
maximum gold medals. The next year, a girl by name Priya, Pooja Shetty, she bagged all the gold medals and stood first. What is the message? Girls are doing phenomenally well. There are some of the fascinating stories from this orphanage. I was told today, one lady by name Mrs. Merchant, she passed away. She stayed here in orphanage. She became an industrialist. Her son is an industrialist today. I'm told his turnover is 500 to 1,000 crores. There are stories of this kind. There are very many who have made their mark. और जब यतीम खाने की बात आती है तो जब हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से हमारी गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे कहा, सर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ है। तो बोले बसाओ क्या होता है? बोले हमारे यतीम खाने के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, आला तालीम देते हैं और फिर उनकी शादियां भी करते हैं। So Anjuman does education in a holistic manner. It's not piecemeal. It's not for short-term goals. But we have a vision set in by our founding fathers. Anjuman achieved one of the greatest milestones in the recent history. That 3 institutions to have been started at one go is the first time in the history of this country which Anjuman did it about 10 years ago. Because we have that legacy of being first amongst few, or first among many also. The first midday meal which you are talking, Anjuman started breakfast meal by one gentleman, soda bottle wala. Early morning breakfast started, with the rest of the country followed. Typing Institute started first in Mumbai. Artisan school at Sabo Siddiq just before the Second World War was started first in India by us. There are very many things we have done and we intend to do. I congratulate everyone in this campus, right from the peon to the clerk, to the ayabai, teachers, managers, everyone. I had one distinguished visitor from the Prime Minister's office. They gave a surprise visit. They said, we want to visit, but it will be surprise. I said, go whenever you want. They came back to me and they said, such a vibrant institution we have not seen. Everyone seems to be positive. Right from the peon to the top man is committed. It's a big, big compliment to this campus. They deserve a big round of applause. And we have not done the official inauguration because the Deputy Chief Minister's office told us he would like to come again. And when someone says that he wants to come, so we have kept it on hold. Because, as I said, Mrs. Pratibha Pawar's sister's husband has passed away in Pune. So they are in the crematorium and they have cancelled all the program. So जब किसी के घर में मैयत होती है तो they don't attend. But he was kind enough to send his staff and communicate that this is it. We continued with our program. First part of the program, the felicitation of the great lady and the tributes to none other than Mrs. Hamida Bhiondiwala. We used to call her Hamida Appa. She was known here as Hamida Appa. These two great ladies, Anjuman is indebted to you, to your family in a big way. और अंजुमन की एक खासियत है कि अंजुमन को जो इतना सा भी एहसान करता है उसके हम कदरदान हैं, बड़े से लेके छोटे से लेके। इसी तरह बरकत होती है, पैसा आपके पास आता है, आप पैसे के पीछे नहीं जाते। अगर आज के प्रोग्राम में
आपके दिल में कुछ ऐसी बात आई, क्योंकि अंजुमन एक रहमदिल इदारा है, अगर आप कहीं कुछ अच्छा काम करना चाहते तालीम के मैदान में, आई कैन टेल यू with all my conviction, Anjuman is the destination. You will never be disappointed. The kind of transparency we have, since a lot of donors are here, 100 crores project at Panvel, when we completed it, we told the donor that it will be utilization account, the money will not come unless his representative sign. We suggested that. And today, he has become our ambassador to tell everyone that it's the place where you should see it. हमारी बड़ी खुशकिस्मत है, मेरे जो साथी यहाँ बैठे हैं, मेरे जो प्रिंसिपल्स आए बम्बई से बड़ी तादाद में, वहाँ से टीचर्स भी आए, ये जो मेहनत कर रहे हैं, हम इनको जो सैलरी अच्छी दे रहे हैं हमारे हिसाब से, लेकिन वो सैलरी उनके लिए कम है, क्योंकि हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल घड़ी नहीं देखते, जो डॉक्टर कभी नहीं देखता, ना मैं देखता हूँ, शाम के 8 बजे तक भी काम करते हैं. दिस इज कॉल्ड द कमिटमेंट, एंड दैट यू ऑल द वे केम फ्रॉम मुंबई. तो तुम यतीम बच्चों की दुआएं लेके जा रहे हो, सबसे बड़ी बात ही है. मुझे आपने बड़े सुकून के साथ सुना. हो सकती है आपकी मजबूरी, क्योंकि इस अदारे का सदर जिसे कहा जाता है वो खुतबा दे रहा है तो सुनना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं मेरी तकरीर में हमेशा यहाँ पहले पुनः भी कहा हूँ कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, और आज भी कम बोला है. कम बोलने वालों का बहुत सुना जाता है. आपने बहुत कुछ सुना, समझा, और अंजुमन के लिए आपने आपके दिल में एक मकाम बनाया. इसके लिए ये बंदा आपका शुक्रगुजार हूँ, और आई विल एवर बी ग्रेटफुल for all of you to have come. Giving your time is also philanthropy. People who matter have spent their valuable time is itself a big contribution. Like Mrs. Natasha, she drove all the way from Mumbai in the summer. That time is very invaluable to us, like many of you. ठीक है, खुतबा कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए. बहुत जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी, और एक प्रोग्राम के साथ. ये 3 महीनों के अंदर हम और एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे. इनॉग्रेशन के साथ और एक खुशखबर ले आएंगे. दुआ कीजिए. और मैं ये बताता चलूँ, अंजुमन का नया कैंपस गोवा में शुरू होने जा रहा है. गोवा में एट पोरवोरिम, नेक्स्ट टू द सेक्रेटरीट ऑफ गोवा. वी आर ओपनिंग ए कैंपस इन शोलापुर ऑल्सो. And we are starting 500-seater hostel at Panvel and at Shabu Siddiq Engineering College. We are erecting a 7-story building for masters, for PhD, and 1 center for research and incubation center with world-class facilities. आप दुआ करते रहिए कि हम अंजुमन इस तरह आगे बढ़े, और अंजुमन के जो करता धरता थे 1874 से लेके मेरे आने से पहले, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा. और हमारा ये मैनेजमेंट का गुज़िश्ता 14 साल से ये मिजाज बना है कि हम हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे उन लोगों को, हमारे फंक्शन में, हमारे दुआओं में हम हमेशा उनको याद रखते हैं. उनकी दुआओं से अंजुमन is the fastest growing Muslim minority institution, inclusive in nature. सबका साथ जो आज बात हो रही है, हमने तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, आज नहीं, गुज़िश्ता 150 साल से. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे नहीं समझ में आ रहा शुक्रिया कैसे अदा करूं. If I have to switch on to English, the very rich language of English will look poor, because I won't be able to give the proper description and adjectives that you deserve. उर्दू में तो मुझे कुछ आता ही नहीं. मैं तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा रहा, लेकिन उर्दू थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ. उसमें भी मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ ये समझ में नहीं आता, लेकिन समझ लो कि मैंने आपका शुक्रिया अदा किया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Thank you, sir, for your inspiring words.
I request our school committee member, Mrs. Shanaz Fakki ma'am, to kindly give the vote of thanks. Good evening. It gives me honor and immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the respected dignitaries assembled here. On behalf of the management, members, and the entire staff of Anjuman-e-Islam campus, I extend a hearty vote of thanks to Shri Kapil Patil Saheb, who has always selflessly helped us in our endeavors. A special gratitude to Dr. Zahir Kazi, President of Anjuman-e-Islam, members of the General Council and General Body, Mr. Mushtaq Antule, Dr. Sheikh Abdullah, Mr. Moez Miyajiwala, for guiding and supporting us throughout in the absence of our Executive Chairman, Mr. Hasib Faki, a perfectionist and our pillar of strength who has always motivated us to do the best. We really miss him on this occasion. Our heartfelt gratitude to our Pune members, Dr. Nasir Kazi, Mr. Munir Chinoy, Farzana Khanna, and Mr. Razi Faki for their guidance. I thank Mrs. Nazura Sattar, our chairperson, for her vision and support to accomplish our goals. We make our living by what we get, but we make our life by what we give. This is a quote by Winston Churchill. I thank Mrs. Bhiwandiwala family and Allana family. Our magnanimous donors always have a willing hand to help us tide in our difficult times. A special gratitude to all our donors. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Is the belief of the members who enthusiastically take up responsibilities and work selflessly for our campus. Sir, this event has been planned and organized mostly by all women members and Mr. Anis Somji, and we are proud of it. A heartfelt thanks to our special invitees and guests for joining us in this event. We should not forget our teaching and non-teaching staff who have tirelessly worked to set up the library, laboratory, and the general keep-up of the entire campus. Thank you to all. As I conclude, I quote Martin Luther King's lines, "An individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity." Thank you. Thank you, ma'am. I request the gathering to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, ladies and gentlemen, for giving us your precious time. Thank you once again. All the teachers and staff who have come from Mumbai head office have to kindly wait here only.